BS Unit 6 past paper questions. So question number 1, we are discussing keywords अभी. Recession का यदि question आता है तो first keyword is reduction in GDP. What is GDP? Gross domestic product. Then second keyword is fall in output over the time. Fall in output over the time. Third is loss of income or lower income. Fourth keyword, loss of jobs, जिसको आप राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हैं. दोनों वर्ड यूज करो, मतलब तो एक सेंटेंस में एक यूज किया तो दूसरे सेंटेंस में दूसरा. सो राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट, then fall in living standards, and people are earning less, so spending will also be less. So the sixth one is less spending. Since it is recession, the sentiment is negative. Negative sentiment. So recession, GDP word should be part of your answer. Reduction in GDP, output gira, fall in output over the time, loss of income or lower income, loss of jobs or unemployment, fall in living standards, less spending, negative sentiment. So this was a short question on GDP, on recession. Next question, question number 2. All past questions we are doing today. What will happen if countries' interest rate falls? इंटरेस्ट रेट गिर गई तो क्या होगा? इंटरेस्ट रेट फॉल्स का मतलब क्या होता है? Earlier, if you borrow $100 and 10% is the interest rate, after the completion of 1 year, you pay 100 as principal and 10 as interest. But if interest rate falls and becomes 4%, so at the end of the year, what you will have to pay back is 104. So interest rate when falls, so log borrow karne se darenge nahi. So when interest rate falls, cost of borrowing is reduced. So first point, only keywords we are, basically key lines we are paying attention at. When interest rate falls, cost of borrowing is reduced. So when cost of borrowing is reduced, people will borrow more. People will borrow more from banks. As taking loans is now cheaper.
अब लोन लेना सस्ता है, and now you can borrow more, so you can spend also more. The second point will be consumers will spend more. मैम मैं साइड बाय साइड खाऊंगा तो चलेगा ना? हाँ चलेगा, खा लो. Consumers will spend more, and when they spend more, क्योंकि अब लोन लेना सस्ता है, तो जब वो ज्यादा स्पेंड करेंगे तो लोगों की सेल बढ़ेगी. जब हम ज्यादा सामान खरीदते हैं तो कोई ना कोई तो उसको बेच रहा है ना. तो जब जब भी चीजें खरीदी जा रही है ज्यादा मार्केट में, तो लोगों की सेल्स भी तो बढ़ रही है. से फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग दिवाली वी बाय मोर, वी ट्राई टू बाय मोर स्वीट्स, मोर क्लोथ्स, तो किसी ना किसी की सेल्स भी बढ़ रही है. सो कंज्यूमर्स विल स्पेंड मोर एंड सेल्स विल राइज. सेल्स बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ रही है, प्रोड्यूसर के लिए अच्छा है. एंड इफ यदि इंटरेस्ट रेट फॉल होती है, सो जो लोग बैंक में पैसा जमा करते थे एज सेविंग की इंटरेस्ट मिल जाएगा. अब उनका इंटरेस्ट मतलब उनका इच्छा कम होगा, क्योंकि ज्यादा इंटरेस्ट नहीं मिल रहा उनको अपनी सेविंग बैंक में रखने के लिए. सो नेक्स्ट पॉइंट विल बी people who deposit money in banks on fixed term will get low interests. And their saving will fall. लोग बोरो करना ज्यादा चाहेंगे बिकॉज इंटरेस्ट रेट लो है, लेकिन बैंक में पैसा रखना कम चाहेंगे क्योंकि इंटरेस्ट ज्यादा मिल नहीं रहा है. सो कौन बोरो ज्यादा करता है? एंटरप्रेन्योर्स, बिकॉज दे नीड टू फाइनेंस देयर प्रोजेक्ट्स. जहां भी उनको प्रोडक्शन करना गुड्स और सर्विसेज, तो दे नीड फाइनेंस. सो एंड नेक्स्ट पॉइंट विल बी entrepreneurs will borrow more to invest in their business. Next question number 3. How can employees be protected at work? How can employees be protected at work? By government laws. गवर्नमेंट क्या लॉज बनाए कि एम्प्लॉयज प्रोटेक्ट हो? सो किस किस चीज पे लॉज बन सकते हैं? मैक्सिमम आवर्स ऑफ वर्क, कि एक दिन में जनरली जैसे 8 hours ऑफ वर्क इज कंसिडर्ड एज नॉर्मल. आफ्टर 8 hours जनरली इन इंडिया ऑल्सो यू विल सी इट इज कॉल्ड एज ओवर टाइम. सो क्या क्या चीज पे लॉज बन सकते हैं? तो फर्स्ट इज laws regarding maximum hours at work.
laws regarding maximum hours at work. Why do they make this law? To protect the employee from tiredness. Say, for example, per week they will work for so and so hours. So, laws regarding maximum hours at work to protect employees from tiredness. Example, 48 hours per week. After that, overtime should be paid. Then ये तो था हमारा first. Then second, unfair dismissal. Not that, see, you should give time to an employee कि okay, 3 months time we are giving you. You try and search for another job. उसके बाद हम तुमको छोड़ेंगे. Not that I'm telling you today that you have to leave from tomorrow. उसका घर कैसे चलेगा? It is dependent on that income, right? Which he is getting from the organization. So laws protecting from unfair dismissal. Unfair dismissal is the keyword. Laws protecting from unfair dismissal. Underline unfair dismissal. Then wage protection, that there should be some minimum wage की employ कर रहे हो तो इतना तो दो. Wage protection. Children, mind you, every keyword is important and should be part of your answer. And these things don't happen last minute. Once you finish this class, you should learn it. Protection against exploitation. And discrimination. Discrimination का example क्या है? A male employee has been given more salary than a female employee. So that is discrimination. So example, you can write male employee being given more salary than a female employee. Next question is, what are the benefits of government building roads? ये past paper में question आया हुआ है. Benefits भी पूछा उसने and social cause भी पूछा उसने. So I'll just take a minute to clean the board. Next question, question number 4 is, government is building roads. Government is building roads. What are the benefits and social costs associated to it? So what are the benefits and what are the social costs associated to it?
So when you build a road, it is related to connectivity. So when connectivity is good, new markets are open. So open up, benefit number one, open up new markets, improving availability of goods. So when there are roads properly connecting parts of a country, distribution cost कम होगी. Second, roads are built cutting distribution costs. It is convenient. To load goods in truck. And carry to all parts of country. Connected with roads. So when there is a good connectivity, goods are sold fast and it is good for the producers. So producers' goods will be sold on a fast pace. So that was first and second benefit. Now let's talk about the third benefit. See, when you are building roads, कोई ना कोई तो वो roads बना रहा होगा ना, तो वो construction जो भी कर रहा है उसको भी तो employment मिला. So jobs in construction related business are generated. And now roads are there. तो सिर्फ सामान ही नहीं travel हो सकता, employees can also travel to the sites when needed. So next benefit is employees can travel to sites where needed. So keywords please underline: new markets, then cutting distribution costs, connectivity, goods can be sold on a fast pace, jobs are generated, and travel of employees on site wherever needed. But social costs bhi hote hain. See, there is pollution. Obviously, roads banegi, pollution hai. Not only visual pollution, it is noise pollution also.
सी दिखने में जंगल और ग्रीनरी और दैट ब्यूटी इज बेटर देन ऐसे तोड़ के रोड या बिल्डिंग बना देना. बहुत सारे वायर्स यदि कहीं लटकते रहते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? इट इज विजुअल पोल्यूशन. दिखने में सुंदर नहीं लगता. सो सोशल कॉस्ट आर visual pollution. Use this word, children. Visual pollution, then noise, environmental impact. हर बार pollution pollution word use करने की बजाय new use a new word. Environmental impact. And when you build a road, in case there were homes, so वो सबको आपको dismantle करना पड़ेगा और उनको नई जगह देनी पड़ेगी. So loss of homes along the route. So this is a common question for boards. So you should know the keywords. Next question. Question number 5. What do you mean by financial benefit? Question number 5. What do you mean by financial benefit? So first line is, it is the profit business makes. Second point is, financial benefit related to money, so it is called as monetary benefit. It is a monetary benefit internal to the business. It is a monetary benefit internal to the business. Next question. All past paper questions only, children. So pay attention. Next question is, you are producing in a foreign country. What factors will be considered? First of all, you will have to follow those countries' rules. हर country का अलग rules होता है, right? So those countries' government rules to be followed.
मैम मैं एक बोलूँ? हाँ बोलो बोलो। हाँ, they will have to follow the currency of the particular country. हाँ मतलब जैसे, प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा वैसे। हाँ सो हमको फॉरेन एक्सचेंज रेट वो कंसिडर करना पड़ेगा, ये बात एकदम सही है। हाँ। तो पहले हम उस कंट्री के हमको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। हमको Ma'am, you'll also have to, ma'am, we'll also have to follow the import tariff car rule. Like in India, if you import a car which has its price above 40 lakhs and it's not made in India, then you'll have to double it. Like उसका price automatically double होता सो है, हाँ 100% tax. एक्सचेंज रेट का जो डिफरेंस है वो कंसिडर करेंगे। सो सबसे सबसे पहले हम बात करेंगे उस कंट्री के गवर्नमेंट रूल्स की। आर दे फ्रेंडली फॉर फॉरेन प्रोड्यूसर्स, वी विल हैव टू चेक। सो आर दे फ्रेंडली फॉर फॉरेन प्रोड्यूसर्स? सो प्रोड्यूसिंग इन अ फॉरेन कंट्री, सबसे पहले वहां की कंट्री के गवर्नमेंट रूल्स देखो। आर दे फ्रेंडली फॉर फॉरेन प्रोड्यूसर्स? What are the financial incentives to produce in a foreign country? Financial incentives is keyword. What are the financial incentives to produce in a foreign country? Ma'am, I can also give an example for this for you. हाँ बोलो। मतलब in India there are foreign businesses, but Walmart also wants to enter in India, but then the government is thinking that all the other shops and all the other startup businesses will then go down because of Walmart. So that's why So that they is are the not Walmart is not able to enter. established foreign country का कोई ब्रांड है। सो गवर्नमेंट सोचेगी कि लोकल लोकल जो प्रोड्यूसर्स है उनको हार्म नहीं हो, वो ये सोचेगी, तो ये बात भी करेक्ट है। हाँ। तो इज गेटिंग द अप्रूवल ऑफ प्रोडक्शन, दूसरी कंट्री में प्रोडक्शन हम कर सकते हैं कि नहीं, वो गवर्नमेंट अप्रूवल देगी तभी तो करेंगे ना। इज गेटिंग द अप्रूवल ऑफ प्रोडक्शन, अप्रूवल ऑफ प्रोडक्शन कीवर्ड हो गया ना। इज गेटिंग द अप्रूवल ऑफ प्रोडक्शन टीडीएस। टीडीएस मतलब मुश्किल से मिलेगी क्या, मिल जाएगी आसानी से, ये चेक करना पड़ेगा हमको दूसरी कंट्री में प्रोडक्शन करते वक्त। देन सेकंड पॉइंट हियर इज सूटेबल वर्कफोर्स अवेलेबल है कि नहीं, availability of suitable workforce। Why? Because लोग भी नहीं मिलेंगे प्रोडक्शन करने के लिए तो कहाँ देखेंगे। देन स्किल्ड वर्कर्स है उस कंट्री में या नहीं, यदि मुझे स्किल्ड वर्कर्स चाहिए तो मुझे मिलने चाहिए ना वहाँ। स्किल्ड वर्कर्स अवेलेबिलिटी, बिना वर्कर्स के प्रोडक्शन कैसे होगा। Is production possible at low cost? लो कॉस्ट से या मतलब है कॉस्ट ऑफ इनपुट्स, मटेरियल, लेबर, वो वहां यदि कम है तभी तो हम Overhead cost, कॉस्ट पे प्रोड्यूस कर overhead सकते and हैं, direct cost. लाइक मटेरियल लेबर का कॉस्ट। नेक्स्ट इज लो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है कि नहीं। इज फैक्ट्री नियर टू मार्केट या नियर टू रॉ मटेरियल? सो मार्केट से कितना दूर है हम, या रॉ मटेरियल से कितना दूर है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लगेगा ना। लो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इज रॉ मटेरियल सोर्स नियर टू फैक्ट्री?
फिनिश गुड्स को मार्केट में ले जाने को कितना कॉस्ट लगता है ये भी देखना पड़ेगा व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग इन सम अदर कंट्री. So what is the cost of finished goods being taken to the market?